टॉपिक है हमारा जो चैप्टर लाइट है क्लास 10th में हमारा ये टॉपिक है उसमें मिरर फॉर्मूला. सो दिस मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ. और वी कैन दीज आर द थ्री क्वांटिटीज. ये तीन क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप है हमारा, वही रिलेशनशिप कहलाता है मिरर फॉर्मूला. राइट. सो मिरर फॉर्मूला को समझने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है. एंड दोज आर फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ. ऑलराइट. सो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ होता क्या एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट आई टुक हियर अ कनकेव मिरर. इसको मैंने कनकेव मिरर क्यों बोला? बिकॉज इट इज पॉलिश्ड आउटसाइड और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज इनसाइड एंड द एड्स आर बल्ज्ड इनवर्ड्स. सो दैट्स व्हाई इट्स हियर द कनकेव मिरर. और इसका जो सेंटर पॉइंट है हमारा दैट इज pole, because pole is the point that is the center point of a spherical mirror. Right. So here I took a concave mirror और हमारा यहाँ पे this is focus, this is center of curvature. Now हम object distance समझाने की कोशिश करूंगा. मैं यहाँ पे object distance क्या है, मैंने object एक लिया and ये object से जो distance है, the distance from the object to the pole, the distance from the object to the pole, ये distance and this distance is called as object distance and this object distance is denoted as u. Right, letter U. Right. Okay. So now the second is image distance. Again, पोल क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास, एक कनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट. और इस सेंटर पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट के बीच में जहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम, तो वो जो डिस्टेंस हमारा होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड एज लेटर U. नाउ उसके बाद जो इमेज डिस्टेंस, नाउ नो मैटर वेयर आवर ऑब्जेक्ट इज, वेदर इट इज इनफिनिटी, वेदर इट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेदर इट इज अ फोकस, तो इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आएगी एंड इससे कोई एक इमेज बनेगी. राइट. इमेज बनेगी दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमारी इमेज कहां पे बनेगी. राइट. सो जहां पे भी इमेज बनेगी, फॉर एग्जांपल इफ आई टुक दिस ऑब्जेक्ट एज इनफिनिटी इज द पॉइंट दैट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जाएगी तो वो बनाएगी मेरी इमेज फोकस पे. तो हमारी यहां पे फोकस पे इमेज बनेगी एंड द डिस्टेंस from the focus to the pole, this distance is called as image distance. The distance from this focus, it's actually the distance of the image to the pole, the distance of image to the pole, or the distance of image from the pole, that is called as image distance. And this image distance is denoted as V. So I have write down here, I wrote down here the distance of image from the pole, that's called as image distance and it is denoted as letter V. Alright, so we came to know about the object distance. Okay, उसके बाद दूसरा हमारा image distance. Now the third and important, that is focal length. You might have already heard this and you might be aware of focal length. Focal length is actually the distance from the focus to the pole, the distance from the focus to the pole. So इससे पहले मैंने बोला होगा the distance from the focus to the pole, that is not image distance. Just because I told that image यहाँ पे focus से बनेगी, so I told that जहां अगर यहाँ पे image बनेगी तो that will be the distance from the image to the pole. So जहां पे भी image बनेगी, so that depends actually हमारा object कहां पे है. So I just, इसीलिए मैंने बोला the distance of image from the pole. So यहाँ पे focal length is the distance from the focus to the pole, the distance from the focus to the pole, that's called as focal length. Now ये तीन quantities के बारे में, these three quantities have a relationship between them. वो relationship क्या है? That is 1 by V. 1 by V is image distance, because image distance is denoted by letter V, and then we have this object distance 1 by U, that is object distance, plus it is equal to 1 by F, that 1 by F is focal length. So again I'll just repeat it once again. 1 by V is image distance, then plus 1 by U is object distance. It is always equal to 1 by F is focal length. So this is the mirror formula, and mirror formula is valid in all situations for all spherical mirrors. When I spoke about all situations, that exactly means that no matter where the object is, whether it is at infinity, whether it is at focus, whether it is at center of curvature, whether it is
between center of curvature and focus. It is valid in all situations for all spherical mirrors. That exactly means it is valid for concave mirror. It is valid also for convex mirror. All right. It's also valid for convex mirror. So why I told this convex mirror? Because it is polished inside and the edges are bulged outward, so that makes it as a convex mirror. And also for all positions of the object, as I already told you, all position of the object means whether the object is at infinity, or is it is at center of curvature, or it is at focus, or it is between the center of curvature and focus. So it is valid in all the situations. Thank you so much.